We can start. Yeah, good afternoon, everyone. Welcome you. Good afternoon, Dr. Kirti. We welcome you all to Facebook Live from Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center. I'm Dr. Kirti. And today I would like to share with immense pleasure with all of you that this month we have completed 1 year of Facebook Live session. Very good. I think that's all the credit goes to you. So thank you. Thanks a lot. बट सर आपके कॉपरेशन और आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था. This is for sure. So it is the time of the year again when the wind is mild, sun is bright, and children are making the world a colorful place. Yes, dear friends, Holi is approaching. Holi, a festival of colors, which brings a lot of excitement and fun in our lives. People celebrate togetherness, share food, and enjoy with friends and families. The logic behind this festival, I'll say, behind every festival is to bring everyone together and celebrate together. So today we have a guest with us to make this session a special one. We are trying to make this Holi special, particularly for persons suffering with diabetes, by giving them the joy of eating guilt-free Holi special dishes. So dear friends, for that we have Chef Sonal from Bombay, who will tell us how to make these dishes without compromising with the taste. Welcome, Sonal. Thank you so much, Dr. Kirti. Thank you so much, Dr. Makkar. Congratulations for this wonderful initiative and completing 1 year. I think you guys are adding a lot of value to a lot of people who are learning how to deal with this lifestyle disease. I, in my own family, have my mother-in-law, both are borderline diabetic. So I can understand, the plight of celebrating a festival without the sweets. Perfect. And so we don't need to celebrate without sweets, actually. Yes, we need to should just, work out ways to celebrate as normal people. Absolutely. In a healthier way. That's important. Yes, sir. And Sonal, for your knowledge, these sessions are a part of our education programs through which we are trying to help persons suffering with diabetes in each and every possible way. We try to pick up small aspects of the life which creates a very special issues for them, and amongst which is food and festivals and celebrations. And as such, as we all are in celebratory mode, so let's begin the session in a celebratory fashion. Sir, would you like to add something? No, I think it is great that we have moved from the standard format, and we have Sonal here, who's going to help our patients with the recipes, which will be as tasty or maybe tastier, but certainly healthier, providing lesser calories and providing lesser disturbance in glucose levels, so they can celebrate the festival, enjoy the delicacies that are usually available during the festival, but unfortunately most of the patients don't enjoy them because of the risk of getting the sugar levels going haywire or the adverse impact on health. I think it is very important that lifestyle diseases, the management should focus on quality of life. And just to update you, Sonal, all through these programs, one of the major, areas of focus for all our educational programs is that you have to live with diabetes or obesity or chronic diseases while maintaining as normal a quality of life as anybody else. So maybe, we don't say that you can do it 100%, but you can certainly do it 80 to 90%. And in fact, if you do that, maybe you'll live a better quality of life than the people who don't have disease. That's right. So sir, to start with, I'll say खाके गुजिया पीके ठंडाई लगा के थोड़ा सा रंग बजा के ढोलक और मृदंग आओ खेले होली हम एक दूसरे के संग. Very nice. So Sonal, what we people see, जो हम देखते हैं हमारी practice में वो ये है कि जो भी हमारे पास
जो लोग जिन्हें डायबिटीज है, जो आते हैं उनके साथ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वो सबसे ज्यादा उनका ये कॉन्स्ट्रेंट होता है, क्या वो सब कुछ खा सकते हैं, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो खा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, क्या है हमारी डाइट में, हमारी रेसिपीज में जो हम चेंज करके उनकी डेलिकेसीज को गिल्ट फ्री डेलिकेसी बना सकते हैं. सो वी नीड योर हेल्प टू गाइड अस थ्रू दिस. Absolutely. Very, very relevant question, because celebration cannot be with the guilt. You know, if you have that guilt, आपके हाथ में वो गुजिया और आप सोच रहे खाएं तो शुगर हाई हो जाएगी और डॉक्टर का फेस सामने आ रहा है, तो फिर वो सेलिब्रेशन कहाँ से आएगी. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको जो भी खाना है आप प्लान करें, क्योंकि व्हेन यू आर मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट आप जो भी खाना बना रहे हैं, जो भी उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए पकवान, मिठाई, ठंडाई और दही बड़े और चाट आइटम्स, आप जो भी खाना चाहते हैं, जो इस फेस्टिवल को स्पेशल बनाते हैं, एंड आई थिंक वो सब आप घर पे अगर बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट में जब आप उसको खरीद रहे हैं, चाहे बेस्ट ब्रांड से खरीदिए, बेस्ट जगह से लीजिए, बेस्ट प्योर देसी घी की मिठाई लीजिए, जो भी आप लीजिए, आपका उसमें कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है कि उसमें वो शुगर कितने डाली है. आप उसे कम करना चाहें तब भी आप नहीं कर सकते, राइट. तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आपका पूरा कंट्रोल है कि आप शुगर कितना डाल रहे हैं, या घी कितना डाल रहे हैं, या नमक कितना डाल रहे हैं अपने चाट आइटम्स में. सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड यू कैन फाइंड योर बैलेंस हियर. नाउ बैलेंस इज द की. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बात करते हैं होली और होली के स्पेशल खानों की, तो ट्रेडिशनली जो भी आइटम्स हैं उनका कोई रीजन है कि वो हमारे उस होली के फेस्टिवल मेन्यू में होता है, जो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं. तो सीजन ट्रांजिशन हो रहा है और हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह भी हम इसे देख सकते हैं. तो जो हम विंटर्स में खा रहे थे, अब वो हम समर्स में वो डाइट नहीं कर सकते, तो ये ट्रांजिशन टाइम भी है. तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारी चीजें जो ठंडी हैं आपकी तासीर में, हम अगर आयुर्वेद देखें, इंडियन कल्चर देखें, तो वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, राइट. तो अब वो सब खाएं, जरूर खाएं अब, लेकिन टाइम इवॉल्व हो गया है, हम लोगों के लाइफस्टाइल्स इवॉल्व हो गए हैं, मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व हो गए, तो हमारे वो रेसिपीज भी इवॉल्व होने चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील. परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद गुजिया. राइट. सो गुजिया क्या है जो आप सिखा सकती हैं हमें? जी जी. तो गुजिया जो है एक ट्रेडिशनली बहुत ऐसा सोचा जाता है कि बड़ी मुश्किल है वो बनाने के लिए, और बाजार से खरीद लो वही इजी है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, एक डब्बा आएगा, हम उसे खोलेंगे और खाएंगे, राइट. सो अगर Sonal, can I interrupt you for a minute? Yes, I think before we move on, I just want to make one point very clear to our viewers, that in today's session we are actually focusing more on the recipes rather on the concept of calories, and we are trying to pick up the conventional or traditional foods that are hallmark of the festivals. So in today's session, making it a Holi special, we have picked up few things which are like part of the celebration, like having a gujia or having a thandai or having dahi bhallas. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम ये चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इसमें शुगर भी है, सो इनकी कैलोरी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ये सब चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते. सो आज जो हमारा फोकस है वो इन अ वे, मतलब फोकस हमारा सिर्फ ये 3-4 डेलिकेसीज पे है जो होली के लिए स्पेशल होती हैं, बट इस प्रोसेस में हम आपको एक ये भी तरीका दिखा रहे हैं कि किसी भी फेस्टिवल में किसी भी डेलिकेसी की रेसिपी को आप हेल्दी कैसे बना सकते हैं, उसकी कैलोरी वैल्यू कम कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपना नॉर्मल फेस्टिवल कैसे एंजॉय कर सकते हैं. सो दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज Facebook live, which is a Holi special. Over to you, Sonal, again. Wonderful approach, Dr. Makkar. Actually, your viewers can modify this kind of recipes for their day-to-day lives also, so not just for Holi. Absolutely. Yes. So these modifications, once they एक बार वो करके देखेंगे कि हाँ, उसे अगर हम फ्राई ना करें, उसे हम बेक कर लें, तो भी उसमें वैसा ही टेस्ट हम ला सकते हैं, बगैर एक्स्ट्रा घी के, बगैर बहुत ज्यादा शुगर के.
तो आई एम श्योर वो बाकी चीजों के लिए भी कॉन्फिडेंट होंगे और खुद से वो कर पाएंगे या अपने घर में फैमिली मेंबर से करवा पाएंगे. So Gujia, as Dr. Kirti said, so let's understand Gujia before we move ahead and understand the new recipe, the evolved recipe. So Gujia is traditionally एक मैदे की केसिंग होती है और उसके अंदर हम एक फिलिंग बनाते हैं जो कि ट्रेडिशनल रिच फिलिंग होती है. वो मावा और ड्राई फ्रूट्स के साथ में बनती है और इंडिया में पूरे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीकों से गुजिया सामने आती है. कहीं पे ये सूजी की आती है, कहीं पे खाली कोकोनट की आती है. सो बट जो हम अगर बात करें होली वाली गुजिया, वो मावा और ड्राई फ्रूट वाली होती है. तो उसी की एक रेसिपी पे मैंने वर्क किया है जो कि मैंने शेयर भी किए है और डॉक्टर कीर्ति बताएंगे कि कैसे उसमें कैलोरीज का डिफरेंस आ गया, राइट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टेस्ट. Can you share the slides? Give me a second. Yes. So then what actually we saw was there was a reduction in 33% of the calories between baked gujia, what you made, and from the market. So ये एक आप देख रहे हैं यहाँ image. Can you see the image? Yes. Yes. But sir, it's very squeezed one. Actually, I am doing it from phone, so. Can you see the image moving now? Yes. So this is basically a baked gujia that Sonal has prepared. Oh, this. Now you can see it. Yes, now it's perfect. Now it is a big picture, right? So this is, you have avoided all the oil that will go into frying, and by doing that, you can actually cut down the calories by almost 30%. So something like, the normal, I think, calorie value, Kirti, how much is it? About 200 calories per gujia? Yes, or more? No, it should be more, I think. We are considering a 20-gram gujia, a small 20 gram, yeah. So 20 gram is about 200 calories. Yes. So by not frying it and by, adding non-sugar substitutes in the filling, you can bring down the calorie value per gujia from 200 to 130 calories, yes. Which becomes very, very, significant. So this is not the final picture, Dr. Makkar. This is right after baking, right? So after this, there was one more small step. The final pictures and the recipe has been shared. So that looks exactly like, any other gujia that you will buy. I think I saw those pictures. Let me share that also. I think these are the ones you want to show? Yes, these are the. This is the final picture. As you can see, the filling inside, and we have not really compromised anything on the taste factor or the ingredient factors in the filling. It has that traditional mawa. It has sugar as well, and also a lot of dry fruits. Just the way a gujia is made. So even if you want to go ahead and make a fried version out of this recipe, you can make it. It will come out to be as good as a regular gujia, right? So just by changing the process of frying to boiling to baking, a lot of difference has come. And in the filling, the recipe which has been given is like the sugar quantity has been given. So now if you want, you can even reduce that quantity, right? So if you want to, further reduce your sugars, you can even reduce that quantity. Actually, the filling, because of the dry fruits used, once you use raisins with that, it becomes sweet otherwise also. You don't really need to add more sugar unless you want to make it very sweet.
Right. So this is a regular recipe which has been shared. So you can further cut. I strongly feel that you can further cut down the sugar very comfortably in that recipe. It can be brought down to half and you will still get that feeling that you are eating a dessert. It's not, आपको मीठा taste आएगा. Plus उसमें हमने filling में cardamom powder डाला है, which, psychologically tells us the taste is sweet. So these are a few small things, which will make a lot of difference. And as you said that if we put raisins inside, I've added sugar, so I haven't put raisins. So you can, substitute the two as well. Yeah. So if you add raisins, basically, there is a sugar component in that, but that also has a fiber. Right. So, it swells up and it reduces the absorption of sugar directly. So it is not that bad if you are adding in a substitute form. In fact, some of the substitutes you can use in cooking also, like sucralose can be used or maltodextrin can be used. So those sweeteners can also be used. Now, important thing here is that another thing that I want to convey to the viewers is that taste is something that is cultivated. If you are used to eating very sweet foods, you will not like less sweet foods. But if you start eating low sweet foods or less sweet foods, say, and you do it for, say, about a month, after that, if you eat something which is more sweet, you will not like that. It is basically something called conditioning. It is conditioning of the mind. You can condition your taste. If you remember, we all as children in schools read about the conditioning experiment, which was the Pavlov experiment. So you give a bread loaf to a dog and the dog starts drooling. And at the same time, the person used to ring a bell. And this continued for a while. And after that, the dog will start salivation or drooling even on the ring of bell because the dog is now conditioned to get food with that bell. So same way, actually, you can condition your taste. It's not something that everybody will like very sweet food. There are people who don't like sweet food at all. They want very less sweet. There are people who want more salt. There are people who want less salt. There are people who want very spicy food, less spicy food. So taste is not something, that comes right from birth and doesn't change. It is something which is very, very cultivable. And I think it'll be a very good exercise that if you try to cultivate that taste for, low calorie, healthier, lesser sweet foods, which can help you in long run to maintain your, healthy eating habits. Sir, I'll ask a question from you. कि अगर हम बात कर रहे हैं सोनल की बनाई हुई गुजिया की, let's talk about baked गुजिया. क्या ये हम जितनी मर्जी खिला सकते हैं? हाँ. So second thing is portion control. Yes. If you think that what happens is people think that it is local, so you can eat as much as you want. So again, you have to control the portion because your daily intake of calories for a diabetes person is balanced by the amount of exercise that person is doing and by the medication that we are using. So if the total calorie intake goes above that average daily intake, the medicine prescribed will not be able to control the glucose levels caused by the excess food. If they consume less, the same medicine may be more than required and person may go into hypoglycemia. So balancing of the calories is equally important. It is very important कि जितना आपको कैलोरीज बताई गई हैं, जितना आपको स्ट्रक्चर डाइट प्लान में बताया गया है खाने को, आप उससे ज्यादा नहीं खाएं. और जितना खाने में आपकी वेरिएशंस कम होंगी, उतना चांसेस हैं कि आपका शुगर में प्रॉब्लम्स कम आएंगी. अगर हम होली के ऊपर सर एक सेशन कर रहे हैं तो बात गुजिया पे तो आके रुकेगी नहीं सोनल. अब हमें बात करनी पड़ेगी ठंडाई की. तो लेट्स सी आप ठंडाई में क्या ट्विस्ट देंगे जो हमारे पर्सन्स हैं जिन्हें डायबिटीज है, जो लोग हैं वो एंजॉय कर सकते हैं.
राइट डॉक्टर कीर्ति, मैं ठंडाई में कुछ भी ट्विस्ट नहीं दे रही हूँ, उसको बिल्कुल ट्रेडिशनल रख रही हूँ, सिवाय उसका स्वीटनर जो है, जैसे कि डॉक्टर मक्कर ने बोला जो आपके मेडिकल साइंस अप्रूव्ड स्वीटनर्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। तो हम वो बॉटल एक जो ठंडाई के लेके आते हैं जो एक रिच शुगर सिरप के अंदर थोड़े से नट्स और बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर और स्वीटनर से बना होता है, उसकी जगह हम लोग एक फ्रेश ठंडाई का पाउडर बनाएंगे जो कि रियल नट्स से, या हम उसे पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, या हम नट्स को ओवरनाइट सोक करके जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता था वैसे भी बना सकते हैं। नाउ द ओनली थिंग व्हिच वी नीड टू कंट्रोल इज ऑफ कोर्स एज डॉक्टर मक्कर सेड द पोर्शन एंड आल्सो द शुगर। जो हम बाजार की रेडीमेड ठंडाई लाते हैं उसमें हम शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसे डाइल्यूट कर देंगे तो उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, राइट? सो नाउ इफ वी आर मेकिंग इट आवरसेल्व्स विद आवर ओन सिलेक्टेड nuts, स्पाइसेस, बिकॉज ठंडाई में सिर्फ नट्स और शुगर नहीं होते, उसमें कुछ स्पाइसेस भी होते हैं, थोड़ी काली मिर्च भी जाती है, सौंफ भी जाती है, सो और गुलाब के पत्ते और इस तरीके की कुछ चीजें होती है जो उसको टेस्ट और वो तासीर देते हैं जो हमें इस सीजन में वो हेल्प करती है टू कोप अप विद द वेदर चेंजेस एटसेट्रा एटसेट्रा. So if you make that thandai on your own with the nuts and spices and of course very sugar कम भी कर सकते हैं आप, या अपने कोई शुगर जो दूसरे आपके मेडिकली अप्रूव्ड शुगर सब्स्टिट्यूट्स है वो भी डाल सकते हैं. So that is one big thing that I would suggest कि आप जब खुद बनाते, and plus this if you make a powder you can keep it in your refrigerator and you can use it for up to 15 days. You don't have to make it every time when you want to. And also when we talk about gujia and other delicacies for Holi, everybody has a busy lifestyle now. People don't really have time कि वो होली के दिन ये सब चीजें बनाने बैठे, right? So I would suggest you plan your cooking for Holi and do things in phases. Maybe आप गुजिया एक दिन या 2 दिन पहले बना दीजिए, वो 1 वीक तक खराब नहीं होती है. आप सब कुछ एक दिन बनाने बैठेंगे वो आपसे नहीं होगा, it will be too overwhelming, right? So best would be to plan things. So I would not recommend making gujia on the day of Holi. So I will strongly recommend कि आप वो quantity अपने plan करके और उसे 1 या 2 दिन पहले बनाएं ताकि आप फेस्टिवल को enjoy कर सके, उस दिन आप cooking में नहीं busy हो. Sir, what I feel is जो सोनल की ठंडाई है, is it a protein pack? So it is, if you're using a lot of nuts to make that basic ingredient, so nuts have good amount of protein. Second thing is whatever the fat is there, it is largely the monounsaturated fats, which is good quality fat. So what you are adding in thandai in forms of the nut powder is actually good for, it is going to enhance the protein intake and, the good quality of fatty acid intake. Only thing again is the portion size. Once people are drinking thandai during Holi, they are usually drinking big glasses and they end up drinking more than one also. So we have to keep in mind that we don't overeat or overdrink all these things. Maybe as Sonal suggested, you make a powder, maybe you consume a small glass for a week, celebrate Holi, not one day, keep celebrating for 1 week. But don't do it in excess. Don't end up drinking the whole powder in one go and think that your sugar will not go up. So ultimately you have to keep balancing calories. Lowering the calories in any particular food is important. At the same time, the portion control is equally important. सर आज डेलिकेसीज से हटके एक और पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या शुगर मॉनिटरिंग इस पीरियड में भी करनी चाहिए पेशेंट्स को जब हम इतना कुछ खाने को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए. शुगर मॉनिटरिंग से तो कभी आदमी को भागना चाहिए ही नहीं, बिकॉज आपको कभी पता नहीं चलेगा कि जो आपने किया उससे आपकी शुगर लेवल पे क्या इम्पैक्ट आया. सपोज आप सोच रहे हैं कि चलो यार देखते हैं. अभी टुडे देयर वाज अ पेशेंट, ही सेड I tried to, experiment with eating more food on one particular day, but my sugar didn't go up. Now, these kind of experiments people do. They try to see कि अब मैं दवाई से ठीक चल रहा हूँ, आज मैं 2 पराठे खा के देखता हूँ उससे कुछ हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है? And then they will check sugar and they'll come and tell कि कुछ नहीं हुआ. So, it is not कि कुछ नहीं हुआ. There are
with once you change the ingredients in the food, the peaking of glucose level may be early or delayed also. So if there is more of protein, more of fat in your food intake, there is slowdown of the glucose absorption, there is slowdown of the stomach emptying, and person may get a peak of glucose at 3 hours instead of 2, or maybe 3.5 hours. And if person checks sugar at 2 hours, is going to miss that peak. Second thing is, they should not, be going back with the idea that if they don't check sugar, everything is going to be fine. They should check that after consuming that half glass or 1 glass, was there a change in the glucose level? So if they find that there was a change, next time they will be, sure how much they want to drink. Or if they are sure that no change was done with this kind of glass of, then they are guilt-free consuming that glass of, thandai for next time or other times. So similarly, once you are consuming one piece of sweet and you see how much sugar has changed, then you are sure that this much is safe or this much is not safe. Maybe next time they'll eat only half. So you have to see the impact of whatever changes you make in diet on the glucose levels, and you can't do it without checking the sugar levels. दही भल्लों के बिना तो आगे कहानी बढ़ेगी नहीं हमारी. So let's talk about दही भल्ला. हम क्या ट्विस्ट, क्या चेंजेस कर सकते हैं रेसिपीज में कि एक पेशेंट जिसे डायबिटीज है वो दही भल्ले को भी एंजॉय कर सकता है. Sonal, can you put light on it? Yes, Dr. Kirti. I would like to say one thing कि जहाँ पे भी फ्राइड खाना पसंद करते हैं लोग, उन्हें वो जो कढ़ाई है उनके घर में उससे हटाकर एक अप्पम पैन, एक बर्तन है, उसके साथ थोड़ी दोस्ती करनी होगी. और जो आप फ्राई करके बना रहे हो, जैसे कि हम दही बड़ों के लिए, भल्लों के लिए बड़े जो है वो फ्राई करते हैं, हम उनको अप्पम पैन में भी बना सकते हैं विद वेरी लिटिल ऑयल. So basically, you just have to change the cooking technique here, and rest everything stays the same. So this is just for everybody's, this is the appam pan. Right. So जो इसमें मैंने ये दही बड़े बनाए हैं, they have turned out perfectly fine. You can see the final result also for these dahi badas, and they have turned out to be spongy. जो दही बड़ा स्पॉन्जी बनता है वो कढ़ाई में ऑयल से नहीं स्पॉन्जी बनता, जो टेक्निक हम उसके लिए डालेंगे वहां से वो स्पॉन्जीनेस आती है. तो और एक चीज, जो ऑयल है उसमें कुछ टेस्ट नहीं है, क्योंकि आप कोई भी आप रेसिपी देखोगे, आप ऑयल डायरेक्टली पीकर देखोगे उसमें कोई टेस्ट नहीं है, राइट. लेकिन कैसे वो फूड आइटम्स के साथ में रिएक्ट करता है, कैसे उसको वो ट्रीटमेंट देता है ताकि उसमें वो टेस्ट डेवलप होता है, तो वही हमने ट्राई किया है कि जो कढ़ाई में फ्राइंग है उसको हम सब्स्टिट्यूट करके अप्पम में उस दही बड़े को कुक किया हमने. सो जो देखने में है, एज यू कैन सी, जो अभी यहाँ पे कर्सर है वो एक अप्पम में बना हुआ दही बड़ा है, और जो नीचे उसके दही बड़ा है वो फ्राई किया हुआ दही बड़ा है. तो देखने में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको अचीव कर सकते हो. इट इज मच मोर इजियर. कढ़ाई में कुकिंग करने से ज्यादा इजी है कि आप एक अप्पम पैन में कुक करें. सो आई वुड रियली स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप एक अच्छे अप्पम पैन में इन्वेस्ट करके और अपनी जो भी फ्राइंग की नीड्स है आप उस पर कर लीजिए. तो आपके, जैसे अभी आप फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो दही बड़ा भी बना सकते हैं आप, पालक वाले पकौड़े भी आप इसके अंदर बना सकते हैं बहुत कम ऑयल के साथ, राइट. सो एंड उसके अलावा दही बड़े में जो हम मार्केट वाला या एक ट्रेडिशनल दही बड़ा जो आजकल खाया जाता है, उसमें ना बहुत सारी दही के अंदर शुगर डाल देते हैं, कहते हैं मिश्री डाल दी हमने. बट यू बीइंग डॉक्टर्स एंड ऑल द पीपल हु हैव टू मैनेज देयर शुगर्स, दे नो कि वो शुगर चाहे मिश्री से आए, चाहे गुड़ से आए, चाहे शुगर से आए, वो चीनी तो चीनी ही है. उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा ही करेगा. So best would be to make dahi which is naturally sweet, right. आपको वो शुगर ऐड करने की जरूरत ना पड़े. तो जो आप टोन्ड मिल्क से दही बनाए, आपने फैट का कंटेंट कम कर दिया. टोन्ड मिल्क से आप दही जमाए, और वो जो दही भी बनने के बाद उसको आप पानी उसका हैंग करिए. हंग कर्ड में जितना आपने वो दही का पानी निकला है उतना ही टोन्ड मिल्क वापस ऐड करिए. So and then taste that milk, mix it really well, whisk it really well, it will be creamy.
आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक फुल फैट फुल फैट मिल्क का दही या एक टोन्ड मिल्क का दही खा रहे हैं. टेस्ट में भी इसमें स्वीटनेस नेचुरल है, बिकॉज मिल्क हैज नेचुरल शुगर कॉल्ड लैक्टोज, राइट. सो टेस्ट भी है उसका और क्रीमी टेक्सचर है, क्योंकि हमने उसको हैंग किया और उसके बाद उसको जो वाटर था उसको सब्स्टिट्यूट किया टोन्ड मिल्क के साथ, राइट. सो एंड इस दही के साथ आप अगर वो अपम फ्राई वाले अपम पैन वाले दही बड़े बनाएंगे, सो इट विल टर्न आउट वेल. इवन फॉर योर चटनी आई वुड सजेस्ट कि जो गुड़ की चीनी गुड़ या चीनी के साथ में एक खट्टी मीठी चटनी बनती है, उसकी जगह आप डेट्स के साथ चटनी बनाएं. तो डेट्स में वो जो एडेड बेनिफिट्स है लाइक फाइबर एंड लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिलेगा, एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा. And you can make this chutney also and store it, you know, for easily for up to a month in the refrigerator. Actually, what we have seen is we calculated the calories basically. जो आपके baked दही भल्ला है और जो fried दही भल्ला है with a normal full cream curd और जो toned curd you told us, we reduce the calorie content by roughly 50% in a bhalla. Yes. So, sir, would you like to add anything to it? So I think it is very important, you know, making these small modifications which can actually help you in reducing the calorie content, making the food healthier, still maintaining the taste, and you can still enjoy, you know, the things that you feel are forbidden for a diabetes patient. So all these things are important, and as Sonal just mentioned, that you don't, it is not just the dahi vada that you are looking at. You want to have a pakoda. Why do you want to fry that pakoda? You can use, you know, the batter in and cook in this appam pan. So pakoda is not just a snack. A lot of people have kadhi pakoda, so which is a common dish in North India. And because people think that kadhi is, you know, fine, it is it's a normal thing. But once you are adding a lot of fried pakodas in that, that will change the whole you know, dish. So if you are cooking something like pakodas in this without oil, we can actually drastically reduce the calories. And in fact, this dahi vada thing, I think we are using what we are using as the batter. It's a dal. It's a dal. It's a urad dal, and it's this also dal. You can make a combination of urad and moong dal also, So or just again, moong dal, you know, also. this is a higher side. This is high in protein. This is high in protein. Similarly, if you are using that gram flour for making pakodas, again that is high on protein. So actually, you can improvise the things, and you can, you know, create recipes for your own. You can you should actually experiment with food, you know, to make it healthier. एक्चुअली में जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं है. इट्स अ हेल्दी लिविंग. हम ये सब अपने लिए भी कर सकते हैं, पूरे घर के लिए कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए एक्चुअली. Yes. See, another thing is people don't realize that reuse of the oil used for frying is not a good idea, because there is a lot of you know, oxidative or oxidated particles in that oil. The food matter which is there in the oil while cooking, it leaves some particles behind which are badly oxidized, and they actually are not good for health. So ideally, once you have used oil for frying, you should discard that oil. So you are actually not only using, say, if you need 250 milligrams of oil, you will need about 600 grams to do the frying, of which 250 gets used for cooking actually, and 350 you will have to throw it off. Absolutely. Now, if you are not using it, you are avoiding that oxidative stress, increase in oxidative components in your food. At the same time, you are saving money. So I think makes a lot of sense. Sonal, there is a question for you from one of our viewers. Yes, please. Can you elaborate a appam pan? Appam pan. We showed you. हाँ, हमने एक पिक्चर आपको दिखाई है, और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम लोग एक कढ़ाई यूज करते हैं जो एक डोम शेप बर्तन रहता है, और
ये जो अप्पम पैन होता है ये साउथ इंडिया में काफी यूज किया जाता है, और वहाँ की एक डिश होती है पनीर अमन और अप्पे अप्पे अप्पे। तो इस तरह की डिशेस वो लोग बनाते हैं जो कि काफी हेल्दी है। और इसमें आप देखेंगे कुछ कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं इसमें ना, कुछ स्लॉट्स होते हैं। इसको आप पहले ऑयल से हल्का सा ब्रश करके अपना बैटर पोर कर दीजिए, और इसमें एक कवर भी आता है, उसको कवर करिए तो वो थोड़े से ऑयल में बन जाएगा, कुक हो जाएगा। फिर इसके बाद आप उसको टर्न भी कर सकते हैं कि दूसरी साइड से भी आपको उसे क्रिस्पी करना है। तो ये काफी एक यूजफुल चीज है। मैं यही बोलूंगी कि मैं तो इसमें इवन चाइनीज के लिए, मंचूरियन के लिए जो मंचूरियन बॉल्स हम फ्राई करते हैं वो भी मैं इसमें बना लेती हूँ, और दाल बाटी के लिए बाटी भी आप इसमें बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप अप्पम पैन में कर सकते हैं बहुत कम ऑयल के साथ, और बहुत फास्ट होता है। आप देखोगे इसमें आपके एक साथ 12 वो बन गए हैं, दही बड़े बन रहे हैं। और आपको इसे मीडियम उस पे रखना है। 2-3 तरह के ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, नॉन स्टिक अप्पम पैन भी आते हैं और कास्ट आयरन के अप्पम पैन भी आते हैं। आई वुड से अगर आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए तो कास्ट आयरन का अप्पम पैन में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसमें अच्छी मीडियम हीट भी आती है, क्योंकि थिकनेस अच्छी है, एंड प्लस you get the benefits of iron as well. Sir, would you like to add anything else to this whole? No, I think we had a very good discussion with Sonal, and Sonal has not only just given you 3 recipes, she has given you multiple ideas of how we can use simple techniques to improve the healthy quotient of the food. Thank you, Sonal. Thanks a lot for joining us. Thank you so much. Thank you, Sonal. Thank you for with those wonderful recipes, and also backup ideas to expand on those recipes and experiment with the food to make it healthier, and help the patients live a normal life, eat those delicacies without guilt. But the important is that don't end up on the overside. Always eat in moderation, eat on time, and keep checking your sugar so that you don't err on wrong side. With that, we will conclude today's session. Sir, I would like to add one thing more. Yeah, Kirti. Sir, we will be posting all the recipes of Sonal on our Facebook page, and we will share the link also. So any of our viewers has any queries or want to know anything, they can just connect with us. Yeah. So with this, I think before I hand over to Kirti, I would wish all our viewers and Sonal a very happy Holi and a happy spring season that is going to be there. Thank you so much, Dr. Makkar. And I also learned a lot about how to manage the diabetic eating schedule and everything, because I think for a healthy person also, eating on time and managing your sugars and controlling everything is important. Yes. Thank you so much. It was a very, very enriching discussion for me as well. Thanks a lot. Thank you, Dr. Kirti. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Wishing you all a happy Holi, and wishing all the viewers also a happy Holi. Hope you all try the recipes and enjoy the healthy food without compromising on taste. And you can leave feedback on our Facebook page also. Happy Holi, everyone. Happy Holi, everyone. Next week, are we having the Facebook live, or we are just celebrating Holi? Sir, we will be celebrating Holi. We will be having a session, but I'll let everybody know Dr. Makkar is not in India next week. So it will be a different type of session. We have a surprise session, yes. And sir, we'll connect with you. Yeah, we'll connect. Yes, sir. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone.